So good evening to all. So is there anyone still remaining? Any of your friends want to join? We'll give it a minute more. If anyone wants to join, please let them know that we have already started. We'll just wait for a minute more. I see a lot of people coming up today. So on a side note, this is just a frank session. Okay, so don't take it a professional one. Just that I faced some issues with my placements an year ago, and hence I want that no one else should do so. So just a frank session overall. Okay, so if you have any doubts or any queries regarding placements and what all stuff to do and what all stuff do really matter for placements, so you may be open. Right? So anyways, this meeting is being recorded. I have put my recorder on. I'll be putting it somewhere on YouTube or Google Drive, and I'll share the link with you anyhow. Yeah. So if any of your friends requires this and is not able to attend today, so he or she may visit that link for the entire video. Yeah. And I'm sorry for the delay. I was a little bit ill. So starting with placements, currently you are in T's. अगर कोई BE भी join हुआ होगा जो अभी BE में होगा, so it's fine. Like अगर help होगा तो बहुत ही अच्छा है. Else then if you are in T's, then like the first thing I would recommend you all is to go with competitive programming. Yeah, like I'm being very direct because I plan to end this session very soon. Okay, so the first and foremost thing which is really important for you guys now is competitive programming. उसमें भी अगर we see at lower levels, then greedy strategies, divide and conquer, and then dynamic programming. These three are really important for you guys now. So like mm, so what should be the number of questions you should be solving each day, and then what should be the level of questions you should be solving? And talking about it, I can say that at least 4 questions from now on. Okay, so you can take a week of a span of 2 weeks you can take, and each week in each interval you can increase a number of questions by one. Fine. So in the first 2 weeks you may say you may solve each day 4 questions. Then in the coming interval of next 2 weeks you may say that you may increase it to 5. Yeah. And then platforms I may suggest that for the beginners for ENTC, if no one is yet to start, if there are some that are yet to start with competitive programming, then go with HackerRank first. Okay, try solving. I would say HackerRank provides you all languages support. So first try solving the particular language that you wish for, that you are good at. So go with it first. I preferred myself with C++ first. I solved all the C++ challenges at the beginner phase, and then once I'm done with C++, I'll be going with contests and other challenges on HackerRank, right? So you may go with it like that. And if you prefer Python, then I would like to suggest that during the placement they usually don't provide Python support. Okay, the companies usually provide C, C++, and Java only. Okay, they don't provide you with Python. So Python is good to know until and unless you are into machine learning stuff, data science, analytics, and all that stuff, right? So you should know C, CPP, or Java. And if I suggest, according to me, C++ is the best one. Okay, uh, Java is still good, but then you have a lot of inbuilt methods in Java, so your actual logic does not come up there. Okay, so if you go with C++ and C, I think is quite boring, but then it depends on you. It's my personal suggestion that go with C++. It's good. It builds up your logic and it provides you the necessary methodologies that you have. Okay, and C you have to write a lot more code, and then you don't have the concept of classes over there. So बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस ओपी वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो यूजुअली वहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं ज़्यादा इसीलिए just for that sake. So C++ is good to go, and then to have extra star on your resume, just add Python to it. Okay, and then so competitive is the only thing which is required for each and every person. ठीक है, बाकी depends on you कि which skill do you wanna acquire, what you wanna learn, what you wanna impress your interviewer with. So competitive is must. Start with 3 or 4 programs
on a daily basis. In a interval of 2 weeks, keep increasing that count by incrementing that count by one. Okay, and try solving maximum of greedy approach, divide and conquer, and dynamic programming. ठीक है. सो whenever जब भी तुम्हारा पैकेज 10 LPA के ऊपर जाएगा या फिर 8 या टिक इट 8 के ऊपर जाएगा, सो दे विल आस्क यू डायनामिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस. ठीक है. दे आर काइंड ऑफ टफ एंड दे रिक्वायर टाइम टू डेवलप. सो take comparative programming as kind of mathematics. ठीक है. 11th and 12th में when we started with trigonometry, so I guess in the initial days मुझे तो बहुत ज़्यादा problem होती थी with trigonometry because I was entirely new to trigonometry. In CBSE in 10th standard we didn't have any of trigonometric techniques या कुछ भी sin cos कुछ भी पता नहीं था 10th तक के. ठीक है. So in 11th I found it really difficult, but then with time, with practice, everything was done very like it was cool. It was cool to have trigonometry in our life. Yeah, sides and distances, सब कुछ. So same goes with comparative programming. You will find it really tough at the beginning, like और उसमें भी dynamic programming कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ पे stack यूज़ करूँ, कहाँ पे queue यूज़ करूँ, कहाँ पे link list यूज़ करूँ, या फिर कहाँ पे arrays की ज़रूरत है, या फिर a lot more properties, कहाँ पे trees लगाऊँ, कहाँ पे graph यूज़ करूँ, कहाँ पे try यूज़ करूँ. Okay, so इस सब में बहुत ज़्यादा you will like catch up your head, अपने बाल पकड़ लोगे, लेकिन फिर at the end it will really help you. It really builds your logic, and then what I'll say, just start with it. Okay, एक दो हफ्ता टाइम दो उसे थोड़ा, समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके. 2-3 दिन एक ही प्रॉब्लम ट्राई करते रहो, इट्स फाइन. बट देन इतना भी मत करो कि 3-4 दिन अगर होगा एक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, देन जस्ट कंसल्ट एनी सीनियर और जस्ट लुक एट सम सबमिशंस. ठीक है, हाउ अदर पीपल्स हैव सॉल्व्ड or what you may say, what data, extra data structures they might be using, and how to increase the efficiency. Yeah, that's very important. So in some companies which offer you really good package, they really look at efficiency or the timeout, how many test cases were the timeout ones for you, and how many did you really pass within time. Yeah, so they really look upon the optimization if they offer you a really good package. Okay, by good package I mean 15 plus, you may say. Okay, and then if your package is below 15, then just satisfying all the test cases is enough, and he or she may ask you about optimization, but then you have a very low chance, right? So I'm really suggesting you that कुछ भी हो जाए, comparative programming अभी से start करो. It's really important now, fine, if you are looking for good placements. Yeah, and then coming on to next, what topics to cover as in academics. So academic wise, I may say that the foremost topics that are usually asked are DBMS, then CN, and then OS. Okay, and then yeah, COA too. So COA is kind of basic, जो हर IT person को जो पता ही होना चाहिए. System buses क्या होती है, and then what are registers, and what are bits, bytes, what is megabyte, gigabyte, ये सारी चीजें. ठीक है, about COA, at the basic stuff you should know everything about COA. कंट्रोल बस क्या होता है, सीपीयू के अंदर का वर्किंग वगैरह. देन व्हाट इफ यू आर गिवन रजिस्टर का अगर साइज दिया है, सो हाउ मच डेटा इट कैन कैरी एट अ टाइम, और फिर पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह. ठीक है, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज इन नाउअडेज पैरेलल प्रोग्रामिंग इज लाइक अ काइंड ऑफ बडिंग टेक्नोलॉजी में से. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज. So for that parallel processing वगैरह के लिए you should know what pipelining is, how concurrency works. Okay, so ये सारी चीज़ें होती है COA में. And even यहाँ पे जो भी comp वाले होंगे, they may know that what I am talking about. So do share it with ENTC guys if they don't have COA as of subject as of now. So IT वालों को भी शायद रहेगा, but then IT वालों को ज़्यादा deep में नहीं रहेगा, right? So I would suggest you to go with COA. It's really important. Then coming on to DBMS. DBMS is quite fun, easy है. अगर बेसिक्स आए तो ही इजी है, अदरवाइज इट्स क्वाइट ऑफ बहुत सारी जगह पे फ्लक्चुएशंस होते हैं, कुछ कहाँ पे थ्योरम अलग दिया है, कहाँ पे अलग दिया है, कहाँ पे कुछ अलग प्रॉपर्टीज है. लाइक दे आर क्वाइट कंफ्यूजिंग इफ यू डोंट गो बाय द बेसिक्स. ठीक है, सो स्टार्ट विद बेसिक्स, होल्ड द बेसिक्स, एंड टिल द लास्ट बी विद बेसिक्स. दैट इज DBMS. ठीक है, and then specifically talking about DBMS, they'll ask you to present an ER diagram for a given situation. Maybe you can say that design a library management system for your college. Okay, so in library management system you can have an entity for books, you can have an entity for maybe barcode scanner, maybe you can have an entity for a person, you can have an entity for a librarian, and then what you can say, you can have an entity for newspaper, magazines,
then it depends on you how specialization you make, how many specializations you wish to make. Fine. You want to keep it generalized, you keep it generalized. But then if you keep it generalized, like you won't be able to go to that depth. Fine. And the interviewer requires you to go to that depth. It's just an example. So he or she may also ask you to have an ER diagram, that is entity relationship diagram for an cab system, Uber, Ola, कुछ भी. Yesterday, शायद 2 दिन पहले ही UBS ने he UBS के one of the guy asked my friend from B about to design a Ola cab system. ठीक है? So it basically requires you understanding of DBMS, how the databases will work, how the entities would be related, what technology would you use, how would you handle the scalability things, and then a lot many stuff. ठीक है? तुम अगर टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हो, तुम अगर Django यूज कर रहे हो, तुम अगर फ्रंट एंड में if you use React, then how it's gonna impact your overall system. ठीक है? What servers you would be using, what would be the speed up, what would be the scale up, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए. Okay, not to the depth, but then basic you should know, so that you can explain कि मैं ऐसा system क्यों बनाऊंगा, what is the purpose and how my request would be handled, and then a lot of stuff. Okay, so ये सारी चीजें you should know. So for that, subjects are really important. When you go with system design, then subjects are important. Fine. And अभी तो इतनी ज़्यादा company system design पे नहीं पूछता है, but then coming years, हमारे टाइम से like from when I got placed, मेरे टाइम पे सिस्टम डिजाइन की क्वेश्चन स्टार्टेड विथ फोन पे. ठीक है? फोन पे था सबसे पहला कंपनी विच इंटरव्यूड यू अपॉन सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकली. ठीक है? उसके बाद दिस ईयर इट्स यूबीएस ऑल्सो. प्रोबेबली फोन पे तो फिर से पूछेगा ही, बिकॉज फोन पे का पूरा काम ही बेसिकली इट्स ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज सिस्टम्स एट द डीप लेवल, बिकॉज इट इज अ पेमेंट इंटरफेस गेटवे. या सो टू द डीप लेवल दे विल गो विद सिस्टम डिजाइन. और बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो सिस्टम डिजाइन टैकल करती है. सो you should know subjects for it. So DBMS में first of all I told you ER diagrams. So ER diagram is nothing but your user presents some requirements to you, and then you are required to have a conceptual diagrams. Okay, you have certain representations. You have you have rectangles, you have ovals, then you have arrows, and how these different entities of the world are connected. The users are connected, or whatever actual objects that are required in your system, how are they connected with each other. Okay, so जिन्होंने भी internship वगैरह किया होगा, they might know that what an ER diagram is, or you may also have studied it in your academics. Fine. Yeah, so coming on to next, we have in DBMS we have transaction management system, which is quite important too. Looking at the case of how your transactions actually work, how consistency is really important in today's world. Okay, rather than there are scenarios where scalability is must, but there are also scenarios where consistency and correctness is must. Fine. So talking in terms of banking, you may say that consistency is must. वहाँ पे मुझे scalability एक दो बार I can like have an alternative for it, but then correctness should be the only thing over there. वहाँ पे important है. If suppose person A ने transaction किया and उसके account से like illegally 50 rupees cut हो गया, ठीक है? उसने spend भी नहीं किया, but then it gets deducted anyhow, then it's not good for my bank, it's not good for my company. Okay, so their correctness and consistency really matters. So, and in other scenarios, Facebook बोल लो or anything else like any social media platform, there instead of consistency, what really matters is your तुम्हारा scalability कितना है. ठीक है? How the server responds to your request. तुम्हारा जो सर्वर है एक टाइम पे how many requests can it take and how many requests can it answer. Fine. ठीक है? तो कितने requests fail नहीं हो रहे. You can say it like that. So these two concepts are really important when talking about like distributed databases systems. Right? So this all comes under databases, and then the most important thing that we have are queries, query writing. Basically, query writing is something which is done. It is a kind of what we can say informal language where you tell something to your machine, and what it will do, it will access the database and will let you know the results. So query is something you have to write, you have to let the machine know, and it will answer you back with you some tables, some output, okay, some textual output. So queries we are only concerned with regards to placement, we are just concerned with SQL as of now. Okay, so MongoDB में अगर तुम्हें NoSQL में अगर तुमने queries लिखने आती है, you know how to work with collections, you know how to work with records, you know how to work with block of code, then it's good. It gives you an extra sharp. You can go with queries for NoSQL as well.
But then talking in terms of placement, what is required is writing queries for just SQL, fine, and then knowing the basics of NoSQL. So basically, NoSQL deals with its full form stands for not only SQL. Okay, उसमें ऐसे like you don't have tables as you have in SQL, as you have in RDBMS. SQL is just a like what I can say, it is a language, but then RDBMS is a whole software, fine. So NoSQL does not have a fixed structure. जैसे tables होते हैं RDBMS में, वैसे NoSQL में ऐसा कोई table जैसा fixed structure नहीं रहता. There you have documents, there you have records, fine. And let me tell you that SQL is also important. ऐसा नहीं है कि SQL का importance अभी कम हो रहा है. Let me be very clear कि YouTube आज भी RDBMS यूज करता है. It even uses SQL today, ठीक है. उसमें ऐसा नहीं कि YouTube मतलब ऐसे बड़े बड़े कंपनीज भी आजकल SQL यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. So if you might think, yeah, so I think DBMS का I've given you enough knowledge. Now coming on to CN and OS. So CN is something which will तुम्हें इतना डेप्थ में भी उसको नहीं जानना है, बट देन यू शुड आल्सो नो द बेसिक्स ऑफ इट, फाइन, बिकॉज लैन वैन ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक फ्रॉम 6th और 7th में भी, या इन आर वो 30 पेजेस का जो कंप्यूटर का बुक होता था, फ्रॉम दैट टाइम वी आर लर्निंग लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, बस क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है. सो ये सारी चीज़ें, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, हब्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें. उसके बाद तुम्हारे OSI मॉडल्स, एंड देन व्हाट आई कैन से IP model, yeah, right, TCP model, then UDP, then protocols at each level, application level, network level, then presentation level पे तो basic होते हैं, then application and network and transport layer, ये तीनों पे जो protocols होते हैं ना, these are really important for you. So you should study them hard. You should know working of how each protocol work and what is the advantage of each protocol. हर layer पे क्या होता है, segmentation क्या होता है, and then packets में कैसे data pack होता है, headers क्या होते हैं, fine, और security कैसे enhance होती है, and then a lot more. So at the basic level you may know all these. ठीक है, it's enough for CM. That's it. So protocols are really important for CM. Then OSI model, TCP/IP model, and then UDP वाली जो चीजें हैं वो, and then what we can say, I हाँ, तो एक और एक आध और कोई टेक्नोलॉजी वायरलेस ले लो, जैसे अपना 802.11n है, ठीक है, विच इज व्हाट आई कैन से एन वायरलेस अडाप्टर जो होता है और लाइक वाईफाई यूज करने के लिए वायरलेस अडाप्टर. हाउ डज इट वर्क, what protocol does it use, then Bluetooth, how does it actually work, what protocol does it use. So at the basic level just CN you should know about these things, ठीक है, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं चाहिए रहता है. And what are the like generals and essentials of networking, that's it, that's required for CN. And then coming on to OS, I may say OS में scheduling algorithms, then what is thread, what is multi-threading, what is multitasking, multi-processing, multi-threading में difference क्या है तीनों में, ठीक है. उसके बाद sync क्या होता है, and how do you handle concurrency जब like बहुत सारी threads एक साथ, वही multi-threading वाले concept, when a lot more threads want to have control of the system. How do they actually process, how does the system actually process your how does it resolve concurrency, ठीक है, किसको control देगा, then all these things. And then paging के concepts are really important. And then scheduling algorithms as I suggested, and then what I can say, yeah, OS के लिए these are enough. And COE के लिए I told you, then DBMS I had, and then CN भी मैंने बताया, ठीक है. So these four subjects are like four pillars for your placement, ठीक है. But then the central pillar जो है वो तुम्हारा competitive programming ही रहेगा till the end. So I suggest कि ये सब subjects पढ़ने के लिए, ये सब subjects revise करने के लिए 3 months are enough, more than enough maybe, yeah. But then competitive के लिए you will require time, around 9 to 10 months you will require to have a good grip on competitive coding, fine. So go with competitive now. थोड़ा चिल लो, ठीक है, रोज के 4-5 प्रॉब्लम्स तो भी सॉल्व करो, बट देन डू इट सीरियसली, ठीक है, इससे ज़्यादा लोड नहीं लेने का है. Do it with good grip. Keep discussing among your friends because that's really important. When you discuss, you will know all the different types of solution. मेरे friend ने ऐसा किया, उसका इतने कम time में answer आया, and then all that thing, ठीक है, all that stuff. So keep discussing with friends and keep solving. That's what competitive is all about. And then अच्छा, अब तक कुछ doubts है? Then we'll move on to projects and internships. Any doubts up till now? Anyone कुछ
भी चलेगा, ठीक है, इट्स अ प्रैंक सेशन. Aaron Rice, this none. I didn't get you, sorry. This one. Yes. Any tip for cyber security? Will you talking about it? Give me some minute. पिलर्स कौन से थे? ओके, सो पिलर्स बाय पिलर्स आई मीन कि सेंट्रल पिलर जो रहेगा कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग रहेगा. सो इफ यू नो कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, सो बेसिकली जो तुम्हारा एप्टी टेस्ट होता है, ठीक है, इनिशियल वाला जो सबसे पहला राउंड जो होता है एप्टी टेस्ट, it consists of around 70% of competitive programming thing, and then it depends on the companies whether वो 70% रखते हैं या 70% से ज़्यादा, but then minimum you can say 70%, and then the remaining 30% is your technical skills like your subjects, ठीक है, DBMS, OS, CN, and then fourth one what I said, DBMS, OS, CN, COA, ठीक है, ये वाली चीज़. और कुछ कुछ कंपनी विद ऑल्सो आस्क यू रिगार्डिंग एसजीएलसी. एसजीएलसी में तुम्हारे मॉडल्स आते हैं, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्क्रम प्रोसेस, एंड देन अजाइल प्रोसेस. वो मेथडोलॉजीज उनकी वो कैसे वर्क करती है, तो एट द बेसिक लेवल, ठीक है, ये जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए. सो वो तुम्हारे चार पिलर्स है, डीबीएमएस, ओएस, सीएन और सीओए, ठीक है, ये तुम्हारे चार पिलर्स हैं. एंड द सेंट्रल पिलर इज जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, दैट्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम. एनी अदर क्वेश्चंस? We'll proceed then. Now, coming on to projects, about projects, what we can say, the projects is kind of an extra star, fifth star to your resume, जिसमें your the technology जिस पे तुम काम करते हो वो इतना ज़्यादा importance का नहीं है, but then what have you actually worked on, it's really important, ठीक है. You should be able to convince the interviewer कि मैंने जो इस पे काम किया है, it's purely mine. I have purely put my efforts, I have purely put my knowledge on it, I have put my everything into it, and then I have designed this system. वो कोई भी सिस्टम रहे, इट शुड बी, भले ही वो एंड्रॉइड का ऐप रहे, इट शुड बी अ वेबसाइट, एनीथिंग, ठीक है, बट देन you have to be able to convince the interviewer that whatever I have done it with full heart, ठीक है. I have put my everything into it, I have learned everything, I have developed my logic, and then I have tried to code this. मैंने सिर्फ ऐसे कहीं से उठाया नहीं है कुछ. So it will not matter what technology have you used, it will matter at some place if the company is concerned with the technology itself, ठीक है. अब suppose a company X is only into MongoDB, ठीक है, ठीक है, MongoDB भी छोड़ दो, they really work with Django, उनका 90% projects are with Django only, so they'll really look forward for Django developers, fine. Only that is the case where your extra skills would come into play. But then if you have any type of projects and you are able to convince them that ये मैंने पूरा खुद से किया है and I am really confident about it, and then what you can say, if you choose me and put me into any technology, I'll work for it, I'll learn the basics, I'll learn everything, I'll show my, like, I'll have good standards, I'll maintain the quality of the things. Then ये सारी चीजें अगर if you are able to convince them through your projects, then they will definitely look forward for you. फाइन. सो एनी प्रोजेक्ट इज गुड, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने सिंपल डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाया देन इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है. बिलीव मी, देर आर सर्टेन गाइज जिन्होंने दो प्रोजेक्ट किए हैं, टुडे दे आर प्लेस्ड इन 15+ LPA कंपनीज, फाइन. बिलीव मी रिगार्डिंग दिस. तुम लोग अपने जो सीनियर्स है, ठीक है, 3-4 महीने और रुक जाओ, देन व्यू द एंटायर रिपोर्ट, उनका एक ब्रीफ रिपोर्ट देख लेना कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अ गाय और गर्ल has showcased in the final interviews, okay. So you will see कि तीन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 प्रोजेक्ट ही दिखाते हैं वो लोग भी, ठीक है, but then they are really confident about their projects, even the slightest of the bit. मैंने ये वाला टेक्नोलॉजी क्यों लिया, देन इसके डिसएडवांटेज क्या थे, वेर वेल ये वाले टेक्नोलॉजी में फ्लॉस किधर आएंगे मेरे पास, मेरा सर्वर रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा या नहीं, एंड देन मेरा यूआई कैसा है, these things really matter a lot, ठीक है, बिकॉज यू आर देयर टू काइंड ऑफ सेल योर प्रोजेक्ट, ठीक है. तुम्हें इंटरव्यूअर को अपना प्रोजेक्ट सेल करना है बेसिकली वहाँ पे जाके. So they really look forward for such developers which can really talk about their project, which can talk about their contribution to the project. Fine. So just make sure that whatever you do it with heart. You should know each and everything. You should know each and every perspective possible of your project. Fine. That's really important. और फिर तुम कोई भी टेक्नोलॉजी करो, it hardly matters. But then जो भी तुम कर रहे हो, do it with full heart. That's it. And then
What are the questions? What about development skills? What I talked about development skills. So development skills मतलब मैंने जो projects की बात की वही, ठीक है. So ऐसा होता है कि it depends on companies, ठीक है. बहुत बार companies जो है उनकी requirement रहती है that we need a good competitive programmers जिनका logic बहुत अच्छा हो, ठीक है. But then also there are some companies जो which work on Node, which work on React, which work on Django. So उनके लिए competitive ठीक है, competitive नहीं भी आया चलता है, लेकिन फिर projects अच्छे रहने चाहिए. It totally depends upon company. You have to go through their career sections page. You have to read their JDs properly. उनके requirements क्या है, उन वो जो भी languages पूछ रहे हैं, am I compatible with that language, उनके उनको जो basic concepts लग रहे हैं, am I aware of those concepts, ये सारी चीजें. And then you have to make a judgment that would this company be good for me or not, ठीक है. बहुत सारी companies होती हैं which work into like what you can say 10 to 11 kind of fields. Banking में हो गया, trading में हो गया, then you can say in purely development हो गया, technical हो गया, ठीक है. So you have sectors over there and company just company ऐसे नहीं कि every time they come up for the same requirement. They have different requirements each year. उनके पास अभी next time अभी समझो UBS this time came for trading for example. Next time it may come for pure development, ठीक है. Then they will look for pure development. अगर इस टाइम उन्होंने they saw system design, so maybe next time उनको system design की need ना हो. They would require some technology which gives you like जिसमें scalability बहुत अच्छा है, which really needs developer which can like give them good projects which will be quite scalable. So then उसके लिए वो they will come for next year, fine maybe. So you have to make a judgment by looking up their career sections page. You can connect to those officials using LinkedIn page, ठीक है. That XYZ sir, you are we got to know that you are visiting our college, so maybe know that what kind of projects do you really expect from us, what kind of technology do you really want us to learn, okay. So you can interact with them, but then officially, okay. ऐसे मतलब direct contact कुछ भी नहीं करना है, just go through their LinkedIn page and then just you can talk to them officially. It's legal. Yeah. So what kind of companies recruit cyber security professionals? So unfortunately हमारे यहाँ पे ऐसी एक आध कोई कंपनी शायद एक आध भी नहीं आती होगी जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करे थ्रू ऑन कैंपस, ठीक है. ऑफ कैंपस यू मे ट्राई, बट देन कंपनीज यूजुअली फील दैट अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को लेना है देन ही और शी शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 years एटलीस्ट, फाइन. सो वो लोग सिर्फ उन्हें ही यूजुअली प्रेफर करते हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है. दे हैव रियली डन सम लाइक काइंड ऑफ यू कैन से बग बाउंटी प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हों वो पर्टिकुलर बंदे ने, राइट. कुछ कोई तो भी वेबसाइट्स में कोई तो भी डिफेक्ट्स ढूंढे हो एंड देन या एज आई सेड बग बाउंटी प्रोग्राम्स किए हो. So it really depends on you how you showcase your skills, but then on campus you can't expect cyber security professionals to get hired, but then off campus there is a lot more scope. You can visit the LinkedIn page, कोई भी company के LinkedIn page refer करो and then there are loads of offers over there that we are in need of cyber security professional, because cyber security के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है. The market is nothing, it's zero. So off campus there are high chances, but then on campus unfortunately no. Right. So I guess it was pretty enough. मुझे जितना मतलब बोलना था, I'm done with it. Now you may continue with your doubts, please. So shall I also speak upon how to like clear the HR round, how to crack HR round? What questions do they ask you, or it's fine? भैया मुझे एक डाउट था. Yeah, हाँ. उनका. मैं ओंकार बोल रहा हूँ. तो मैं अभी थोड़ा डीप लर्निंग सीख रहा हूँ और उसमें थोड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, Okay. और मुझे डेवलपमेंट में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था. ये डाउट मैंने हिमानी को भी पूछा था कि अभी मैं इंटरव्यू के लिए गया तो शी सेड कि इंटरव्यू के लिए गया तो डीप लर्निंग पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए तुझे थोड़ा बेसिक्स वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट कुछ तो सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट करना पड़ेगा. Okay. तो बेसिक्स एज कितना मुझे करना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को थर्ड उतना ईयर में इंटरेस्ट एंड्रॉइड नहीं है. प्रोजेक्ट है ना. थर्ड ईयर में एंड्रॉइड प्रोजेक्ट रहता ही है सबको, राइट. और एक वेब का प्रोजेक्ट रहेगा सेकंड सेमेस्टर में. उतना कर लिया, उतना पता है, इट्स इनफ, ठीक है. मैंने जैसे बोला दे वोंट जज यू ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव बीन वर्किंग ऑन, दे वुड प्योरली जज यू ऑन हाउ आर योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड दैट प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट कुछ भी रहने को एक्स वाई जेड, इट डज नॉट मैटर टू देम, बट देन योर हार्डशिप्स दैट यू हैव पुट इनटू, योर एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इनटू, दे रियली मैटर टू देम.
Okay, and if you have good skill with deep learning, then you may sound good at mathematics, you may sound good at statistics maybe if you are with good at data science. ठीक है, then अब जैसे मेरा एग्जांपल लो, आई गॉट प्लेस इन HSBC ड्यू टू माय डेटा साइंस वाला पार्ट. ठीक है, मैं फॉर 1 year आई हैव डन डेटा साइंस. ठीक है, आई आल्सो हैव 2 to 3 projects on it, and then the HR was impressed by my that skills, statistics और trading वाला skills. He was quite impressed by those skills. एंड आई गॉट सिलेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ दैट. मुझे जावा नहीं आता था और मैंने स्ट्रिक्टली उनके लाइक टेक्निकल इंटरव्यू में मैंने स्ट्रिक्टली बोला था दैट आई एम अनअवेयर ऑफ जावा, प्लीज डोंट क्वेश्चन मी ऑन दैट. ठीक है, सो मेरा मतलब काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हो गए थे टू गेटिंग प्लेस, बट देन HR राउंड में आई इम्प्रेस देम विथ माय स्टैटिस्टिक्स एंड माय डेटा साइंस नॉलेज, सो दैट गॉट मी सिलेक्टेड. So it totally is upon you that you should first of all तुम एक ऐसी फील्ड में हो which would require you to do coding, which would require you to have development within you, right? Because companies come to your college looking in having in minds कि ये बंदे को coding आता होगा, ये लड़की को coding आता होगा, right? So you need to have that basic knowledge about coding. You need to showcase them through 1 or 2 projects. ठीक है, तो उतना तो वो check करेंगे. So you can have your academic projects over there. तो अपने academic projects दिखाओ या तो अपने personal projects दिखाओ. Apart from coding, you can also have your, as you said, deep learning skills. You can involve mathematics in it. Higher level mathematics you might have studied. You might know different algorithms. You might know certain optimizations in the correct algorithms. Okay, you can go with it. You can discuss like openly. You can discuss it with them. But then yeah, so jitna zyada you will let them know ki I'm this open to this technology, I'm open to this mathematics, I'm open to this new field, they'll like to explore more about you. Fine, but then you need to have a basic level of coding within you, and that is that you can showcase through your basic projects that you have in third year, maybe in second year. Yeah, it's in. So next one, I heard that companies hire in our college only for development and not for ML AI. Is this true? Yeah, there are certain companies. There are actually lot many companies which only focus on development. But then most of the companies आजकल ऐसी बहुत सारी companies हैं which are really a good startup. But then बहुत सारी companies ने अभी तक which are like good in like जो अच्छा package offer करती हैं, which really give you a good working culture, which are not kind of startup, which are kind of stable companies. उन लोग ने अब तक MLAI, they are just hiring professionals for MLAI. Okay, they can't simply trust upon you and hire कि तुम machine learning के algorithms implement करोगे, because हम जो machine learning करते हैं, ठीक है, it's not research based, it's just कि मैंने एक algorithm use किया, then I classified my data, I predicted the data, मैंने एक but then I have never designed an algorithm. ठीक है, to actually get hired as a machine learning enthusiast, you need to have that grip of mathematics in you कि अगर मुझे बोला गया ये particular algorithm को ऐसे modify करना है, इसमें मुझे ये error parameter introduce करने हैं या फिर जो भी XYZ at the lower level मुझे जाके optimize करना है, then you should be able to optimize, and only then they will hire you for ML or AI. ठीक है, not just using an simple एक library use कर लिया, NumPy use कर लिया, SciPy use कर दिया, graph plot कर दिया, this is not ML AI. ठीक है, so they usually don't have trust on college students. Why not trust? It's simple. ठीक है, it's very simple because हमारे स्कोप में उतना मैथमेटिक्स है ही नहीं. These 4 years don't teach us that level of mathematics that we can modify an algorithm, we can optimize an algorithm. ठीक है, you need deeper level of research for it, you need to have some PhD degree, you need to have that professionalism in mathematics, only then they would trust you for ML and AI. ठीक है, because अगर लाइब्रेरी लिख के अगर मैं एक प्रोग्राम लिख सकता हूँ, देन कंपनी भी वो लिख ही सकती है. हाउ इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज? ठीक है, डिफरेंट तब बनेगी ना जब वो खुद को जाके खुद का कुछ एक एल्गोरिदम दे विल डिजाइन एंड दे विल ऑप्टिमाइज इट टू द लाइक डीपर लेवल्स, तभी जाके दैट कंपनी वुड बी डिफरेंट, नो? एंड हेंस दैट कंपनी वुड रिक्वायर प्रोफेशनल्स इन मशीन लर्निंग एंड AI basically. ठीक है, so they just require the development side of you. What extra features can you include by developing some applications, and then current technology use करके तुम लोग क्या extra features add कर सकते हो, या particular problems you can solve, या जो भी XYZ चीजें. But then talking of intelligence which requires a higher level of research, yeah, if you are good at that thing, अगर mathematics सही में इतना अच्छा है that you have read external books, तुमने हजारों किताबें पढ़ी हुई है, उसके बाद you designed a specific algorithm, so the company might think of hiring you and with a good package. वो अपने पैकेज से बाहर जाके भी तुम्हें हायर कर लेंगे, but then you need to showcase them that I am worth it, right?
So that's the only truth that ML और AI के लिए hire नहीं होते हैं. They usually have professionals for them. The ones they have done research में भी, जिनके पास mathematics का भी research का degree होता है, so they usually get hired for ML and AI. Because ML and AI is not just import NumPy, import SciPy. It's not just like that. It's like कि SciPy के अंदर जाके कोड के अंदर जाके देखना मैं इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. So it requires mathematics. So next one, what would you suggest if I if I want a job in data science after college? Do I still have to do competitive programming? Competitive programming is must. You can't escape it. Okay, unfortunately, yeah, you can't escape it. But then if you start loving competitive programming, I'll say कि तुम्हें actually you will start developing skills for data science as well. Okay, because competitive programming deals with a lot more than you actually think. Okay, it not just deals with your logic, it requires to know many perspectives, it requires to know many aesthetics of logic, maybe many aesthetics of the real world out happening there, trading वगैरह, ठीक है, money business, money, all that thing that competitive requires. It's not just about what do you have. You don't actually only need logic for competitive programming, but then almost each of your skill gets developed with competitive programming. So if you are doing competitive programming, it would really help you. तुम कोई भी कंपनी में बाहर जाके जॉब रोल के लिए जाओ, if they hire you a good package, ठीक है, 7+, 8+, या फिर maybe 10+, so they'll require you to know competitive programming. अगर TCS के लिए बैठ रहे हो तो ठीक है, competitive solve नहीं भी हुआ तो चल जाएगा, but then they will check your logic anyhow by asking you some questions, by like having some puzzles with you. But then if you solve competitive programming, if you solve good competitive programming questions, then they will hire you for a good package. So if you need a good package, go with competitive programming. And then data science skills, statistics skills, so these will come with time. ठीक है, उसका इतना लोड नहीं लेने का है. These are the extra skills that add to your resume basically. So competitive is must for any company. What is your thought on like one should go for MS in data science directly or take a job and have an experience in and then apply for ENT students like we are not having OSNC even a syllabus so from where to study. Okay, so a lot many channels are available. So recently मुझे बहुत सारे लोगों ने like they texted me भैया मैं ENTC का हूँ, so how to like study those subjects which I am unaware of. So मेरा एक ही suggestion रहता है, first of all whenever you go for an interview, they check what department you belong to. Okay, अगर तुम ENTC के हो, by default वो लोग अपने questions उस type के पूछेंगे जो तुम्हारे department को belong करेंगे. Okay, they won't. अगर तुम suppose you go prepared with database, but then at the basic level, they won't directly ask you transaction क्या होता है. ठीक है, they won't directly ask you how would you control concurrency in transactions. Okay, they will go with step by step. They will go with for CR diagram, the most basic question. अगर ENTC का बंदा है तो ठीक है, so you have an added advantage over there कि अगर तुम ENTC के हो, so don't it's no big worry. ठीक है, it's kind of advantage because you can have that कि उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं रहेंगे बिकॉज दे नो कि मैं अपने सब्जेक्ट्स करते करते आई एम डूइंग द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कॉम्प 2. ठीक है, मैंने सिर्फ 2 महीने में मैंने कॉम के इतने 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं. सो दे वोंट आस्क यू लाइक इतने हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट देन यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इट. राइट, तुम्हें बेसिक लेवल पे तुम्हें थियरीज पता होने चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट पता होने चाहिए, बट देन इफ यू आर गुड विद बेसिक्स देन आई गेस देन लाइक बीइंग एन ENTC गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज. So what was your other question? What is your thought on one like should go for MS in data science directly or take a job? So personal suggestion is like have an experience, see how the market is, how the trends are for data science, and then only choose MS for it because usually when you go for MS, you also require LORs over there. You require, if you have good experience, you have a good chance to get selected for a good maybe a good position. ठीक है, राज भैया है, राज ओक करके है, ही इज अ पास आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, उन्होंने शायद बीच में सेशन भी लिया था. यू कैन कनेक्ट विथ हिम ऑन लिंक्डइन एंड यू कैन आस्क हिम दैट व्हाट शुड आई प्रेफर. ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ MS गाय, आई वोंट लाइक, मेरा पर्सनल सजेशन है यू शुड गो विथ एक्सपीरियंस, बट देन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. यू शुड कंसल्ट हिम वंस और एनी ऑफ योर सीनियर्स हु इज करंटली परस्यूइंग MS or has already done MS. Fine. So my personal suggestion is just have experience and then go for MS. Next one. Should we solve questions from lead code type platforms or code forces code? So this is a good question. Yeah. So first hacker rank. एक बार hacker rank पे तुम्हें confidence आ रहा है. It's like कि 5 out of 3 questions solve हो ही जाने. अगर at a time I take
5 questions, out of those 3 will be I'll be able to solve anyhow, ठीक है. And then fourth में ठीक है, fourth का भी suppose मुझे 80% solution मिल गया, but then 20% I'm not able to grasp, kind of ऐसा अगर हो रहा है, then you can skip hacker rank कि hacker rank पे I'm like not confident enough, बस एक आध क्वेश्चन है जो which I'm not able to solve, then you can switch to code first code chef, ठीक है. लीड कोड इज काइंड ऑफ चलाते रहो साथ में. लीड कोड इज की तुम जो थियोरेटिकल जो नॉलेज पढ़ रहे हो उसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है. लीड कोड विल गिव यू दोज क्वेश्चन जो तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में जो सॉल्व किए. सपोज इन्वर्ट अ बाइनरी ट्री, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ बाइनरी ट्री, डिलीट अ नोड, डिलीट एन इंटरनल नोड, ऐसे वाले क्वेश्चन विच हैव ऑलरेडी सॉल्व, विच आर काइंड ऑफ थियोरेटिकल, ठीक है. दे डोंट लाइक टैकल विथ योर ब्रेन एक्चुअली. इफ यू रियली वांट द टैकलिंग, अगर वैसा वाला अगर टैकलिंग अगर चाहिए दिमाग में, सो यू शुड गो विथ कोड शेफ फर्स्ट, देन कोड फोर्सेस, ठीक है. कोड फोर्सेस मतलब उसका जो लेवल है बहुत ज्यादा ही अच्छा है कोड फोर्सेस का. सो फर्स्ट गो विथ कोड शेफ इफ यू रियली वांट टू लाइक harass your brain maybe. So go with code chef first, then go with code forces. Okay, so I guess I'm clear. Any other questions? सो लीड कोड का ऐसा है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है. मतलब रोज देखते रहो कि आज का रेगुलर चैलेंज क्या है बेसिकली, ठीक है. अगर आता है यू कैन स्किप इट, नहीं आता है तो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. Any other doubts, queries regarding anything? So, yeah, do companies come in our college for internship in third year, and what about MCAT? So, ठीक है, मैं थोड़ा अनऑफिशियली जाता हूँ MCAT के बारे में. MCAT is kind of just like it gives you a कि how your placement scenario would go on. MCAT सिर्फ उसके लिए रहता है usually. It kind of gives you a feeling कि placement कैसा होने वाला है, ठीक है. मेरे हिसाब से like there would be only a single or two companies which really look your MCAT score, but then MCAT is important. Why? To get into that gist of your placement scenario. वो gist में जाने के लिए MCAT is important. You really get to know कि मुझे कितना आता है solve करना. Because you might have seen whenever you appeared first time for MCAT, so maximum of you might not have been able to solve all questions over there. At least I'm talking about competitive programming. सब क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं हुए होंगे क्योंकि MCAT वाले जो है दे यूजुअली प्रेफर डायनामिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन. वो रैट और माइस वाला एक क्वेश्चन होगा, ठीक है. वो चीज उसको कहाँ पे मिलेगा, मेज वाला क्वेश्चन. सो दैट्स अ प्रिटी कॉमन क्वेश्चन. वो काइंड ऑफ अ बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है विच दे एवरी ईयर पुट इनटू MCAT टेस्ट, just to have a feeling inside you कि how important is competitive programming for you, and what type of questions are really important, what type of question they would you would be asked upon, you would be tested upon. So MCAT को ऐसे लो कि it's kind of pre preparation for placement, ठीक है. Don't just completely depend upon MCAT. MCAT में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ तो जॉब अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. But then you should be pretty serious about it because preparing for MCAT ultimately will let you prepare for your placements basically. Okay, so do companies come in our college for internship in third year? Unfortunately, no. Whenever you apply for an internship, so you need to have that. मतलब तुम्हारे पास उतना ब्रांड रहना चाहिए, उतना रिकॉग्निशन रहना चाहिए that principal sir should allow you to go for an internship, ठीक है. And then they offer BE project sponsorships in fourth year to you. And then third year में कुछ कंपनीज को कॉलेज अलाउ करता है फॉर मे बी इंटर्नशिप, फॉर मे बी प्रोजेक्ट्स, ठीक है. वो कॉलेज अलाउ करेगा ओनली देन यू कैन अपीयर. बट देन अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो देन यू शुड बी एबल टू लाइक गिव अ गारंटी टू प्रिंसिपल सर कि yes, I would cope up with my academics, I won't let my academics down. And then you need to like have a kind of faith. The principal sir should have a kind of faith on you. This guy or this girl would cover everything that has been lost. And then accordingly, ऐसा, ठीक है. Does an internship matter? So मेरा पर्सनल सजेशन है कि I count internship and projects on the same level basically. So whenever we do a project, you do it on your own, ठीक है. You do it on your individual basis. तुमने टेक्नोलॉजी खुद से चूज किया है, तुमने टॉपिक खुद से सिलेक्ट किया है, तुमने प्रॉब्लम खुद से फेस किया है, ठीक है. बट देन इट डिपेंड्स ऑन कंपनी ना, ठीक है. जो तुमने अभी प्रॉब्लम चूज किया है वो एक्चुअली इतना हाई लेवल प्रॉब्लम सपोज था ही नहीं, इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था उसका सोल्यूशन.
So the company might look in this way कि ये बंदे ने जो problem choose किया है, it's quite simple, it's pretty easy to solve. But then there might be another company which would look at it कि यार इसने खुद से ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, पहली बात तो ये खुद से इसने रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करवाए, then on his own he or she may has chosen technology, that what technology to prefer, on his or own efforts he has chosen कि what scaling, what speed up should his or her technology should use. So there are kind of companies which will look at your projects differently. So कुछ कंपनीज ऐसे रहेगी which would see you if you have been through a guided project, मतलब you can say internship में if you have gone through a guided project, guided series of projects maybe, then some company might feel कि ठीक है, this guy has a sense of how actually things work in industry, इसने किसी के गाइडेंस के अंदर काम किया है, this guy knows how the market runs, this guy knows how IT is, ठीक है. बट देन देयर माइट बी अदर कंपनी की इसने खुद से कुछ नहीं किया है, इसने सिर्फ इंटर्नशिप किया है एंड देन ही और शी इज जस्ट शोइंग मी अ सर्टिफिकेट. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी. At last, how can you convince with an internship or a certificate? So you should know each and every bit of your project if you are doing a project. If you are doing an internship, you should know each and every bit of your internship, that whatever role, suppose you were an Android developer at your as an intern, you were an Android developer, then you should know all the services, all the methods that Android uses, and what all have you used, what all data structures have you actually used, how have you handled errors, तुमने testing phase में तुमने कुछ किया क्या, और अगर नहीं किया, so you should know the at least the basic की testing कैसे काम हुआ, then each and all perspective basically, ठीक है. So anything you do, just you should be able to speak up on it कि मैंने ये किया है, मेरा स्कोप इतना था, I was expected to do this and I gave the final product as this, ठीक है. पहले प्रोडक्ट ऐसा था एंड मैंने उसमें मॉडिफिकेशंस किए, या फिर मैंने खुद से पूरा बिल्ड किया एंड गेव द फाइनल प्रोडक्ट एज दिस. सो एनीथिंग यू डू, जस्ट यू शुड बी एबल टू स्पीक अप कि मैंने इतना किया है एंड देन मेरा स्कोप इतना था. आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स? What is the suggestion to an ENTC student? Okay. Start with comparative programming, सबसे ज़्यादा important. भले ही लाइक ठीक है, focus on your academics as well, because in ENTC academics do matter, because some companies see your academic score if you are an ENTC guy, ठीक है. Because ENTC वालों से थोड़े subjects की कम उम्मीद रहती है, इसीलिए they usually see your score, your CGPA, your SGPA. But then if you have excellent skills at competitive, if you have solved almost अगर 3 questions दिए हैं, if you have solved suppose 2 full questions and third वाले के 80% टेस्ट के थे, 70% टेस्ट के थे, then you stand out of the list from being just an ENTC guy, and you get selected for an interview. And if you like stuck with your competitive knowledge, अगर तुम अपने इंटरव्यूअर को शॉक कर दो, then he or she won't even look at you being an ENTC guy, ठीक है. सो फॉर एन ENTC स्टूडेंट्स it's more important to have competitive thing in your curriculum, ठीक है. रोज competitive का सॉल्व करना है एंड देन लाइक सब्जेक्ट्स तो लास्ट के 3 मंथ्स में स्टडी करना इट्स इनफ, हो जाता है, ऐसा कुछ टफ नहीं रहते हैं सब्जेक्ट स्टडी करना. सब्जेक्ट्स आर क्वाइट इजी, जस्ट यू नीड जस्ट टू रिक्वायर मोर फोकस इन दोस 3 मंथ्स. बट देन अभी के लिए इफ आई से जस्ट गो विथ competitive, ठीक है, दैट्स इनफ. एंड सम प्रोजेक्ट्स, सम मे बी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लो जो काइंड ऑफ ट्रेंडिंग हो, बिकॉज नाउ यू हैव इनफ टाइम, ठीक है. सो कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे भी काम करो विच इज क्वाइट ट्रेंडिंग, से मे बी you may work on some blockchain projects maybe, ठीक है. then you may work on Django, you may work, अगर फ्रंट एंड का अगर बात करो तो you may work on React maybe, yeah. so statistics थोड़ा डेवलप कर लो, अगर फिनटेक कंपनी में जाना है तो go with statistics, go with some trading kind of thing, अगर फिनटेक अगर टारगेट कर रहे हो, ठीक है. बट देन कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग, ठीक है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स में टाइम नहीं मिलेगा अपग्रेड करने का. सो नाउ यू हैव इनफ टाइम. इम्प्रूव योर लॉजिक, इम्प्रूव योर ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग वाली जो स्किल्स है उनमें से कोई एक स्किल को पिकअप कर लो, उसको इम्प्रूव करते रहो, उसको अपग्रेड करते रहो टिल द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है. लास्ट 3 मंथ्स तक अपग्रेड करते रहो. देन इन दोस 3 मंथ्स स्पेसिफिकली गो अबाउट कोर्सेज, गो अबाउट सब्जेक्ट्स, एंड देन व्हाट ऑल यू हैव डन बिफोर, जो तुमने जितने भी तुमने अपग्रेड्स किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं खुद के ऊपर, देन जस्ट रिवाइज देम इन दोस 3 मंथ्स.
So it's that simple. Okay. Abhi just focus on new technology. Start working on some work on AWS. I would suggest. ठीक है? AWS पे काम करो. बहुत सारी companies को demand रहती है for AWS. ठीक है? Yeah. Any other? Do people get jobs in data science on campus? So, not as such data science, because same thing that I said for ML and AI, they check your data science knowledge. They actually don't check your specific data science knowledge, but they check you on statistics maybe. They check you on mathematics. ठीक है? काफ़ी सारी कंपनीज दे चेक यू ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इफ यू शोकेस देम कि मुझे उतना आता है आई हैव दैट रेलिवेंट नॉलेज बट देन दे डोंट डायरेक्टली हायर यू फॉर डेटा साइंस ठीक है मे बी 4-5 साल अगर तुमने वहाँ पे काम कर लिया दे हैव अ फेथ इन यू नाउ कि दिस गाय कैन हैंडल द स्टैटिस्टिक्स पार्ट दिस गाय कैन हैंडल द डिसीजन मेकिंग पार्ट this guy has got some good analytical skills then they might upgrade you to that position but then directly you can't expect a data science position directly as an undergrad fine so that's the only answer that I can give I want to go to fintech company so what should be my area of focus okay तो fintech company में comparative programming पहले तो हर जगह लगेगी वो ठीक है एंड देन फिनटेक कंपनी यूजुअली लुक एट योर बैंकिंग स्किल्स ठीक है तुम्हारे बैंकिंग तुम्हारे ट्रेडिंग वाले स्किल्स को देखेंगे यूजुअली इट्स नॉट लाइक कि वो हर एक बंदे को उस पर पूछेंगे बट देन इफ यू शो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है देन दे यूजुअली चेकअप ऑन यू ठीक है कि कितना आता है तुम्हें एंड देन कंपेटिटिव इज मस्ट फाइन एंड देन डेटाबेसेस ठीक है डेटाबेसेस इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर और या बैंकिंग ट्रेडिंग ये इंपॉर्टेंट है बट देन इफ यू स्पेसिफिकली टेल देम आई एम अ प्योर टेक्निकल गाय ठीक है सो दे वुड चेक योर मे बी जावा एंड C++ ठीक है so it's totally upon you how you guide them through your interview and let me remind you one thing कि luck is one of the greatest things in your interview too because बहुत बार जो तुम्हारे interviews होते हैं ना interviewers जो रहते हैं ठीक है there are interviewers with different mentalities ठीक है अभी कोई interviewer को personally suppose Java पसंद है so he or she may judge you on basis of Java ठीक है तो लक ऑल्सो मैटर समटाइम्स तो गणेश भगवान का थोड़ा चढ़ावा चढ़ा लेना इंटरव्यू में जाने से पहले काम आता है बहुत बार ठीक है सो बेसिकली लक भी बहुत ज़्यादा काम आएगा सो कैसा होता है व्हेन लक लक विल प्ले विथ यू तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में अभी रिसेंट वाली कंपनीज में ऐसा हुआ है एक बंदा जिसको मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आता था ही और शी वाज नॉट आस्क्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज बट देन दूसरे बंदे को सब कुछ आता था एक चीज़ नहीं आती थी उसको वही वाली चीज़ पूछी सो बहुत बारी ऐसा हो जाता है बट देन डोंट गेट डिमोटिवेटेड बस ऐसा याद रखो अपना टाइम आएगा अच्छा can we apply for off-campus and in-campus companies at the same? Yes, you can apply for it. There is no harm. Okay, but then if you are getting selected by some company, do let your peers know about it. Do let the TNP team know about it. So that once you get placed, you don't take a chance of another student by applying at through the college. ठीक है एक बार अगर तुम बाहर भी प्लेस हो जाते हो सो लेट द टीएनपी टीम नो अबाउट इट ठीक है ताकि फिर अगर तुम वापस कॉलेज में भी अप्लाई कर रहे हो तो this should not hamper दूसरे बंदे का chance to get place at the company which has come to the college. Okay. So next one, the project you mean is academic final year project or self projects? Any would matter. ऐसा कुछ the examiner don't ask you कि ये तुमने academically किया या ये तुमने self explanatory किया है ठीक है एक्सटर्नल वोंट इवन बी वरीड कि ये कोई इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट है या फिर दिस इज सम लाइक सीनियर हैज गाइडेड यू या किसी सीनियर का प्रोजेक्ट है until and unless you are able to explain the examiner नहीं सॉरी इंटरव्यूअर अबाउट योर pros and cons of your project about the in and outs of your project अगर तुम उसको हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हो he or she won't be concerned about where the project came from how did it work but then you should know everything about it ठीक है सो एनी प्रोजेक्ट्स वुड डू एकेडमिक्स अगर एकेडमिक भी कर रहे हो आई वुड सजेस्ट कि डू इट विथ योर हार्ट ठीक है ऐसा मत करो कि बस करना है तो कर रहे हैं मार्क्स के लिए कर रहे हैं डोंट डू दे रियली मैटर अगर वो भी अगर अच्छे से करते हो यू कैन शोकेस देम ऑन योर रेज्यूमे ओके सो नेक्स्ट वन कैन यू प्लीज टेल अबाउट योर जर्नी
what all you had done during college. Okay, so my journey, मैंने competitive इतना जल्दी नहीं start किया था, but then I had quite interest in mathematics. I had interest with statistics basically. So मैंने जैसे पहले बताया, I studied statistics for almost an year, and then currently I have 3 good projects at like data science. ठीक है, so मेरा जो selection हुआ at HSBC HTI HTI, so it was only on the basis of statistics. ठीक है, क्योंकि मुझे जावा तो आता नहीं था. They asked me certain questions on Java in the tech interview round, but then I was unable to answer them. मुझे उन्होंने एक दो logic puzzles पूछे, वो मैंने answer कर दिए, काफी easy थे वो. And then in the HR round, which was a kind of techno HR round, मेरा techno HR round lasted for around 45 minutes, fine, and it was completely based on statistics. You may say Bayesian theorem in statistics, and then you can say binomial in statistics, and then you can say normal distribution, Gaussian distribution. ये सारी चीजें आती है statistics में. So completely उसके ऊपर uncertainties के ऊपर, probabilities के ऊपर. So then a little bit of banking, मुझे जितना knowledge था, मैं जितना crack कर पाया interviewer को उस पे उतने में बस मैंने किया. And then I was selected only on the basis of statistics and data science, I think, I guess. ठीक है, so on a higher level I am interested in mathematics. ठीक है, and then mathematics में भी अगर नीचे जाओ तो statistics, but then comparative मैंने मतलब fourth year के beginning में ही start किया था. पहले इतना ज़्यादा नहीं आता था, but then data structure I was good with. I was aware with data structure, and I was good with DBMS. Currently I have also completed with DBMS sessions for your seniors जो अभी current BE में है. I have recently completed the DBMS sessions for them. एंड देन थोड़ा बहुत COA आई लव. ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, बिकॉज बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद. थोड़ा बहुत COA, that's all about me academically. So where should one focus to get placed in Deutsche Bank? Okay, Deutsche Bank मतलब it is DB ना, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ले लो, that's it. Dynamic programming plus confidence. ठीक है, in the interviews you really require confidence, you really require a good perspective, you require a good insight, you require a way of interacting, you require communication skills, you require personality. Talking in terms of interviews, in terms of cracking the test, you really require logic, you really require an out of box solution, you really require dynamic programming skills. इसीलिए with the start of this session I suggested dynamic programming को पूरा तोड़ दो. ठीक है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो dynamic programming that there should be no question left behind. Fine. So DB मतलब DP, dynamic programming, it's simple. ठीक है, your personality, your confidence will really matter at Deutsche Bank. Fine. Any other question? Okay, we'll give another 2 minutes. We'll wait till 5:20. It's 5:18 now. Jivaya, I want to ask just one question. Like you told, statistic is important. So can you suggest a source, good source where I can learn a statistic? Okay, so currently college is providing you free resources in terms of Coursera. Yeah, so Coursera पे बहुत अच्छे अच्छे courses हैं only for statistics. ठीक है, मुझे statistics का पता है, इसलिए I'm telling you, first go with statistics, deep statistics में जाओ एकदम. जब तक सर पकड़ने की नौबत नहीं आ जाए तब तक वहाँ से statistics पढ़ो. जितना ज़्यादा you can learn statistics from there, learn from it. Coursera पे बहुत ज़्यादा अच्छे resources है statistics से related. अगर एक बार तुम्हारे concepts clear होते हैं regarding statistics और जो भी तुम्हें और सारी चीज़ें करनी है, suppose you wanna learn suppose you wanna learn some trading, you wanna learn something different related to banking, वो सारा पहले कर लो, then go with data science. तो फिर डेटा साइंस करने के like once you have statistics in your hand, once you have the basic concepts in your hand, then data science is like a kid's play maybe. Then you just need to have data, you just need to have an insight for what purpose I am surfing this data, for what key point I'm willing to find from this data, what thing I need to scrape from this data. एक बार अगर ये तुम्हारे पास इंसाइट आ गया, एक बार ये वाली एक क्वालिटी आ गई कि मुझे उस डेटा में से क्या खींच के बाहर एक्सट्रैक्ट करना है, सो इट्स बेसिकली इजी फॉर यू देन. सो फर्स्ट जस्ट लर्न द बेसिक कंसेप्ट. स्टैटिस्टिक्स पे जितने भी कोर्सेज हो
ऑन कोर्सेरा. कोर्सेरा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, वहां से पहले रीड कर लो एंड देन इफ यू विल यू मे गो विद डेटा साइंस. What according to you is the best way of doing competitive at this point of time? Is the best way of doing? I didn't get your question, Dhruv Nadkar. What do you mean by the best way of competitive? Like, do you want me to elaborate how many number of questions and what level of question should you practice or what? Yeah, so as I said कि you can have intervals तुम रख सकते हो दो वीक का. So in the first 2 week you can solve 3 to 4 questions. ठीक है, एक दिन में. It's not necessary तुम्हें solution मिल रहा है कि नहीं, but then it's necessary if you're trying hard or not. ठीक है, that's what necessary is. You can allocate maybe 3 to 4 hours for competitive. अभी इतने ज़्यादा lecture नहीं होते होंगे, इतना ज़्यादा burden नहीं हुआ होगा due to lockdown. So daily के रोज के 3 to 4 questions and then in each interval increase the count by 1. ठीक है, first 2 weeks में do with 4 questions maybe, next 2 weeks में make it 5, next 2 weeks में make it 6, then you can like stretch yourself up to 7 or 8 per day maybe. Okay, 700. I am not just saying कि तुम्हें solution मिलना चाहिए, but then you should try each day. ठीक है, अगर at the end of second या third day तुम्हें solution नहीं मिलता है कोई question का, ठीक है, then you may consult some seniors, you may consult the submission sections in the platforms that you have, CodeChef, HackerRank, maybe. Yeah, you can consult Stack Overflow, but then keep trying. जब तक like वही सर पकड़ने की नौबत नहीं आती तब तक try करते रहना question. Do certificates as I was able to complete some courses on Coursera in one day because solutions are available on GitHub. So अगर ये चीज तुम मुझे आके बता रहे हो GitHub वाली चीज, तो ये चीज एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है. ठीक है, सो नाउ यू डिसाइड डू सर्टिफिकेट्स रियली मैटर. ठीक है, अगर सर्टिफिकेट तुमने दिखा भी दिया, इफ द इंटरव्यूअर गेट्स इंटरेस्टेड इन योर सर्टिफिकेट, ठीक है, सो वो तुम्हें डायरेक्टली ही और शी वोंट जस्ट गिव यू अ जॉब ऑफर. ठीक है, ही और शी विल टेस्ट यू ऑन दैट. ठीक है, उसे भी पता है कि ये पर्टिकुलर कोर्स में कौन सी क्वालिटीज दिस गाय मस्ट हैव टॉट हिम, या फिर कौन से टेक्नोलॉजी पे इसने काम किया रहेगा. ठीक है, सो ही और शी विल डेफिनेटली गो फॉर दैट टेक्नोलॉजी. ही और शी विल लाइक go to the deepest of your thoughts and extract out all the things that you have learned from it. अगर कुछ भी नहीं सीखा है, GitHub से कॉपी पेस्ट किया है, then he or she might know. वो इंटरव्यूअर है यार, उनका प्रोफेशन ही है लोगों के फॉल्स पकड़ना, लोगों के ट्रुथ्स बाहर लेके आना. उनका वही काम है, वो 10 साल से वही काम कर रहे हैं. So they know better that what they are doing. ठीक है, so don't try to cheat on them. As a beginner, what do you think from where to start for competitive? As a beginner at a like noob level, you can go with HackerRank. ठीक है, नो डाउट. हैकर रैंक पे जाओ. इफ यू आर जस्ट चूज एनी ऑफ CPP और जावा. पहले तो सिंटैक्स स्टडी करो, पहले एडवांटेजेस स्टडी करो हर एक लैंग्वेज के. चूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन प्रैक्टिस दैट लैंग्वेज. दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वो 30 days ऑफ चैलेंज एक रहता है, एंड देन वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं. ट्राई सॉल्विंग दोस ऑन हैकर रैंक फर्स्ट. ठीक है, once you are done with 1.5-2 months of HackerRank और तुम्हें लग रहा है कि 5 में से I am able to solve 3 questions और 4th क्वेश्चन के मे बी 50 to 60% टेस्ट केसेस आई एम एबल टू क्रैक, देन यू कैन मे बी स्विच ऑन टू लीड कोड. लीड कोड को रोज ऐसे देखते रहना, उस पर रेगुलर चैलेंजेस आते हैं. ठीक है, हर रोज एक चैलेंज आता है, सो उस पर रोज देखते रहो. अगर वो चैलेंज तुमने सॉल्व किया है पहले लैब में, अगर सॉल्व किया होगा या हैकर रैंक पे अगर सॉल्व किया रहेगा, तो यू कैन जस्ट स्किप इट. देन यू कैन मूव ऑन टू कोडशेफ. कोडशेफ इज थोड़ा मतलब हैकर रैंक और कोडशेफ में थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, एकदम ऐसा एक स्लैक वाला एकदम सडन इंक्रीज हुआ जैसे. ठीक है, एकदम स्टीप स्लोप जब आ गया वैसा वाला थोड़ा फील आएगा, बट देन अपग्रेड करते रहना पड़ेगा टाइम के साथ. ठीक है, यू कैन गो विद कोड शेफ देन. और कोड शेफ में एक बार 3-4 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ब्रशअप कर लिया पूरे स्किल्स, देन ट्राई सॉल्विंग कोड फोर्सेस. नो हाउ. It's enough time. It's already 1 hour 30 minutes. I say yeah, it's 1 hour 30 minutes. Okay, so I guess the session was pretty informative. Okay, I guess it would help you guys, and I would take a goodbye from you. I'll mention my contact details over here. किसी को अगर कुछ भी doubts है, you may ask me on my contact number, or I'll also provide an email ID.
गाइस कैन वी प्लीज स्टॉप सेइंग थैंक यू, नहीं तो मेरे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिस हो जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है दिस वाज रियली रिक्वायर्ड, इसीलिए मैंने लिया है। सो आई आई टेक थैंक यू एज अ होल, ठीक है? अभी अभी और कोई मत बोलो। आई टेक थैंक यू एज अ होल। So here are my contact details. I have provided in the chat window. You can check them out. Just take a screenshot of it and then I'll end the meet.